And Kashmiri apples are known worldwide for their superb flavour. With harvesting season in full swing, orchard owners in Jammu and Kashmir are looking for profits as they expect a decent apple harvest this year. Apple growers in India's Jammu and Kashmir territory are busy picking the fruits of their hard work and are all set to ship out their produce across the country. They're looking for profits as they expect a decent apple harvest this year. Climate conditions were a bit unfavorable initially due to heavy rainfall, but there has been a decent harvest as compared to the previous year, an apple grower said. पहले ज़माने में अब इसमें बहुत कंपटीशन है, मगर यहाँ के लोग भी इसमें अब दिलचस्पी ले रहे हैं और नए नए अक़साम बनाते हैं जो बाहर से आते हैं। गाला मास है, दूसरा किस्म है, ट्रेडिशनल है, वो भी चलता है और यहाँ से भी उन्होंने अब बहुत इसमें करना शुरू किया। डिपार्टमेंट भी देता है इसके में मदद। Apples are harvested, graded according to their size and quality, and finally packed in cartons for sale. Jammu and Kashmir is India's largest apple-producing region and along with Himachal Pradesh state is known as the Apple Bowl of India. It is the mainstay of the local economy with hundreds of rural people eking out their livelihood from this industry. सर अभी तो हमने 10-15 दिनों की शुरू किया ये काम, तो अभी 2-2.5 महीने ये काम चलेगा। इधर तो दो ही चीज़ में काम होता है, या खेती बाड़ी में होता है तो या सेब में होता है। इसके साथ मजदूर भी बचते हैं, गांदरबल हो, शिपेन हो, जो ये हमारा इलाका है इसमें ये काम चलता रहता है। इसके साथ धूप भी अच्छी है और इंशाल्लाह मौसम भी अच्छा है। रंग इस साल कम है मगर इंशाल्लाह आएगा।